So welcome to my next video. In this video, like in this channel, I'll be basically consolidating all my learnings and sharing with you all in on YouTube. So moving forward, we'll be dealing with the percentile function. So first question is, what is the 90th percentile for employee salaries in the dataset? Okay. So we have a function percentile. Exclusive, we have two types of function, percentile exclusive and percentile inclusive. In exclusive, it returns the kth percentile of values in a range where k is the range 0 और 1 inclusive होंगे और exclusive होंगे सॉरी, और 0 और 1 इसमें inclusive होंगे. ठीक है, तो जैसे कि हम अभी कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे परसेंटाइल एक्सक्लूसिव हमें मतलब थोड़ा डिफरेंस मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा. सो moving forward, we'll be using what's the difference between percentile exclusive and inclusive. ओके, सो मैंने अभी सर्च किया परसेंटाइल इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस. तो एज थॉट अर्लियर कि इंक्लूसिव में 0 1 इंक्लूड रहेंगे, मतलब वी कैन also get the minimum value which is 0% and maximum value which is 100% एज अ परसेंटाइल. और फिर परसेंटाइल और परसेंटाइल इंक्लूसिव एक ही चीज हो गई, इक्विवेलेंट है, क्योंकि 0 1 इंक्लूड हो गए. और एक्सक्लूसिव में 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे. देर आर दिस वैल्यूज विल लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 एंड 1. एग्जाम्पल 0.01 to 0.99. ठीक है, डजेंट मतलब यहाँ पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज नहीं मिलेंगे. सो use a different algorithm that's more statistically robust for large data set. Large data set में हमारा exclusive काम होता है. ठीक है, नई चीज. ठीक है, so we'll use percentile inclusive or exclusive. We can use any of them since because we are calculating 90th percentile. So I'll use percentile inclusive. array मतलब हमें किसका करना है, salaries का. ठीक है, salaries का. और इसमें हमें 90 परसेंटाइल कैलकुलेट करना है ना, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या होगा, 0.9. 0.9 is equivalent to 90 percentile. And we are done. What is the 50th percentile? Years of experience among all employees. ठीक है, यहाँ भी परसेंटाइल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता. अभी किसका कैलकुलेट करना है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, 50 मतलब 0.5. ठीक है, डन. हाँ, नॉट डन. कोई गलत कॉलम देख लिया क्या, के कॉलम ही तो है. देखो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0.5, के 2 से के 501 तक होना चाहिए. ओह, 0.5, 0.5. ठीक है. 75 percentile for numbers of products handled by employees in the marketing department. ठीक है, we'll check if percentile if करके कुछ होता है क्या. ना, समझ गया. तो फिर what we have to use is ठीक है, तो we'll use percentile exclusive inclusive यानी if इसके अंदर यूज करके देखते हैं. लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, जो डिपार्टमेंट होगा वो मार्केटिंग होना चाहिए. ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पे एरर दे दिया और इक्वल्स टू मार्केटिंग. अगर ये ट्रू है तो हमको क्या चाहिए, किसका परसेंटाइल निकालना, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड. ओके, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसका ये वैल्यू चाहिए हमें. ठीक है, ये तो हो गया. अब एरर दे दिया हमने इसको, अगर ट्रू होगा तो वो आ जाएगा. और हमें कितने चाहिए, 0.5. 0.5 है. अरे आई नो ब्रदर. 75 हो गया हमारा 0.75. 75 डिवाइडेड बाय 100
the 0.75 which is 11. ठीक है. What is 25th percentile for work hours per week for employees who are interns. Okay, सबसे पहले हमें percentile exclusive if logical test employees who are interns, तो मतलब यहाँ पे जो employment status होगा select them equals to intern and value of true. तो किसका हमें मीन निकालना है, वो मीन क्या परसेंटाइल निकालना है वर्क आवर्स पर वीक. ओके, डेटा सेट वर्क आवर्स पर वीक, वर्क आवर्स पर वीक या वर्क आवर्स पर वीक. इसका हमें वैल्यू ऑफ ट्रू, ये हमें आर मिल गया. इसका हमें 25th परसेंटाइल मतलब 0.25. क्लोज द ब्रैकेट एंड वी आर डन. Okay. What determine 90th percentile for the salary of employees who are working in contract role? Again, same process. Percentile, exclusive, inclusive, anything. If okay, have to contract role and 90 percentile. Okay. Role should be contract. Where it is. Okay, employment status equals to contract. And if value is true, then what we have to calculate of them. Percentile of salary. Okay, and select the salary. Okay, and then 90th percentile, so it will become 0.9. Close the bracket and we are done. Find the 10th percentile of performance ratings for employees in the customer support department. Okay, percentile customer support performance rating 10th percentile. Okay, if so customer support department should be customer support as a department. Okay, here it is, equals to customer support value if true. What we have to calculate percentile of performance ratings. Okay, performance status performance rating. We have got the array. Now how much percentile? 10th percentile, so that will become we have to 0.10 and close the bracket and calculate the 75th percentile of the employees have the number of years employees have been in the current role. Okay, this is a simple percentage exclusive array number of years in the current role. Years in the current role. Okay, 0.75. Done. 90 percentile of the salary employees who are married and have a performance of rating above 7. So here we have two conditions. Okay, so we'll be using along with percentile we'll be using ifs. So logical test 1. Oh, okay, we'll not be using ifs, we'll be using if. Okay, if में पहली condition employees who are married, we'll be using first condition. Okay, marital status, where it is, where is it, marital status, oh here, marital status, this should be equals to married. यहाँ पे थोड़ा मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है. We are done with first condition. Now asterisk, which means and. Now we'll give second condition, performance rating greater than 7. Performance rating greater than 7. Done with the second condition. Now if all of them are true, तब क्या चाहिए हमें, of salary 90 percentile of salary का हमको चाहिए
ओके, नाउ वी आर डन विथ सैलरी कॉलम आ जाएगा, ये हमारे पास एरे आ गया। अब इसका हमें 0.90 एंड वी आर डन। 25th percentile of the or the years of experience of employees who are divorced and worked in finance. Now the two condition percentile if again uh, who are divorced and worked in finance. So marital status will be divorced equals to divorced. There is a bracket for the first condition, asterisk, open the bracket for another condition. Department should be finance equals to finance. Okay, and now value of true, तो हमें किसका कैलकुलेट करना था? Years of experience, years of experience array मिल गया हमको. Close the bracket for the if. Now 0.25 will mention percentile value and मुझे लग ही रहा था कुछ error होगा. If data set. Okay, okay. हाँ जी यार, क्या इशू है? कैंसिल क्या है? अगेन मेरे हिसाब से मेरे को ये 0.25 होना था. और यहाँ 25 लिख दिया था. 10% of the number of products handled by all employees with a PhD. Okay, pretty simple. Education PhD होना चाहिए. Education हमारा equals, oh sorry, if तो लगाना भूल गया. If education हमारा क्या चाहिए? PhD equals to select the cell where PhD is mentioned. If value is true, then bond which are number of projects are number of projects. Close the if. Now 0.10. Point. Okay. 0.10. Okay. I know I'm going to do this. Okay. I know bracket is missing. Done. So that's all for this video. Percentile हमने कैलकुलेट किया. नेक्स्ट में हम एवरेज, फिर लार्ज फंक्शन, स्मॉल फंक्शन, ऐसे बहुत सारे हमारे पास करते रहेंगे.